ब्रीफिंग। आई नो आपको कैटेगरीज एग्जाम में थोड़े डाउट्स है, आई नो। हम एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। इफ यू वुड हैव सीन very next page, there is detailed information about categories and taxa. So it's just an introduction. लेकिन इंट्रोडक्शन में भी हमने कल 4 डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स लिख लिए, राइट? बस वो डिफरेंशिएशन के पॉइंट की तरफ देखो और आपको जो भी कंफ्यूजन है just keep it there for one lecture. Everything will be sorted. कुछ लोगों को समझ गया होगा, वंडरफुल। Right, see what I said. Simple भाषा में हमने क्या बोला? For classification in taxonomy, we follow hierarchy, arrangement in a specific manner. This is called taxonomic hierarchy. In this hierarchy, we use 2 words. One is explaining rank level of the classification. रैंक कौन सा है, राइट? सो ये रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट? रैंक इसको हम कैटेगरी बोलेंगे। हाईएस्ट रैंक का नाम है क्लासिफिकेशन में किंगडम और लोएस्ट रैंक का नाम है स्पीसीज। स्टेप का नाम कैटेगरी, राइट? देयर आर 7 obligate categories. Typical classification there can be many to discuss. वो स्टेप पे बैठने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम, उसके ग्रुप का नाम टैक्सा। So kingdom Animalia includes species dogs, cats, man. Mango, right? कडुलिंबाचं झाड, चिंचेचं झाड. So all mango plants, one species. All human beings, one species. Right? So when it is about dog, cats, right? Man, you know that it is animal. So these species belong to kingdom animal, Animalia. And you also know one more word that these species represent mammals, and mammals are animals. So सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम एनिमेलिया, उससे छोटा ग्रुप मैमल्स। मैमल में सब ग्रुप्स डॉग्स, कैट्स, मैन, राइट? इतना जो अभी मैंने 5 लाइन बोले वो पता है। स्टेप का नाम रैंक, कैटेगरी। स्टेप पे बैठने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप या लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम टैक्सा, राइट? ओके, remember this, we'll discuss in detail. Now, when we discuss all these parts, classification, categories, taxas, right? Allotment, nomenclature, what is this branch of biology which is dealing with this? The branch of biology dealing with classification, branch of biology dealing with nomenclature, right? Branch of biology dealing with all these categories, taxas, allotments. It's called taxonomy. What is the name of the branch? Taxonomy. Write down. Taxonomy. T-A-X-A. Sorry, T-A-X-O-N-O-M-Y. Taxonomy. Taxonomic hierarchy लिखा है हमने, right? So what is that branch? टेक्सो, राइट? सो यहाँ पे टेक्सो को मैं जस्ट चेंज करती हूँ, टैक्सेस प्लस नॉर्म्स। टेक्सोनॉमी को मैंने स्प्लिट अप कैसे किया? 2 शब्द में। टेक्सोनॉमी is a word, is a term coined by 2 words, that is taxes and norms. Taxonomy is a scientific term coined by 2 words, that is taxes and norms. Right? Norms, you know, there must be some norms. We should follow norms. Norms are important in life. Norms, right? What are norms? Norms are
rules. Norms means rules. Taxes means, what is literal meaning of taxes? It is arrangement. So what is meaning of taxonomy? Meaningful, lawful arrangement. रूल्स फॉलो करके लॉफुल अरेंजमेंट. रूल्स फॉलो करके लॉफुल अरेंजमेंट. वो जो ब्रांच है जिसमें मीनिंगफुल लॉफुल अरेंजमेंट होगी उसको हम बोलेंगे टेक्सोनॉमी. उसको हम बोलेंगे टेक्सोनॉमी. टैक्सेस, अरेंजमेंट, नॉर्म्स, रूल. टेक्सोनॉमी. Meaningful arrangement, lawful arrangement is studied in this branch, and hence the term taxonomy. This term is coined by A.P. de Candolle. What is the name of the scientist? A.P. de Candolle. अब आप बोलेंगे मैडम ध्यान में कैसे रखना है, वो काम मेरा है. जब भी मैं बोलूंगी मेरे साथ आप 5 बार बोलोगे, अपने आप लागू हो जाएगा. राइट? चलो बोलो. टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी, टैक्सेस प्लस अरेंजमेंट. मीनिंगफुल, लॉफुल अरेंजमेंट. टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी, टैक्सेस plus norms, taxes plus norms, lawful, meaningful arrangement. Lawful, meaningful arrangement, taxonomy. Right? Taxonomy, A.P. de Candolle. 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 Right? This word taxonomy is coined by A.P. de Candolle. अब पूरे लेक्चर में जब भी taxonomy बोलूंगी, A.P. de Candolle is taxonomy. A.P. de Candolle is taxonomy. Right? क्यों नहीं याद होगा? Right? So who coined the term taxonomy? A.P. de Candolle. 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 Right? Okay, de Candolle. Okay, so that is what is meaningful arrangement, lawful arrangement, taxonomy. Okay, देखो आप बोल रहे हो, ग्रुप पे बड़े लाइक्स दे रहे हो, मुझे लेक्चर बड़े पसंद आए, थैंक्स अ लॉट. राइट? एक्चुअली ये हार्डकोर बॉटनी है, थोड़ा पसंद नहीं आता है बच्चों को, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो. ग्रेट. चलो, तो हम सब इंस्पायर्ड हो गए, अच्छी बारिश शुरू हो गई, एंड वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक. We all actually is biology going to picnic. तो हमने वहां पे जाके ऐसे सोचा कि चलो स्टडी टूर अरेंज करते हैं, मजे करेंगे लेकिन पढ़ाई भी करेंगे. राइट? तो हमने एक स्टडी टूर अरेंज कर लिया. मैंने आपको अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे दी. बच्चों साथ में छोटे छोटे बैग्स लोगे, जिप लॉक वाले. राइट? एक फाइल लोगे. ओके, यू आर सपोज्ड टू कैरी सीजर्स, देन हैंड लेंस. ओके, देन आप थोड़ा इंसिजन वगैरह लेने के लिए रेजर्स, ब्लेड्स लोगे साथ में. राइट? टिफिन वगैरह जीडीएस बायोलॉजी दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है. यू जस्ट कम विथ योर ब्रेन विथ यू. राइट? ओके, पूरी पिकनिक की तैयारी हो गई. वी मेट अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock. जैसे ही आप आए, राइट, फर्स्ट क्लास गरम गरम कॉफी. ओके, और मैंने आपको एक छोटे छोटे बुक्स बांट दिए. वो बुक पे लिखा था बॉटनिकल की. बुक की क्या लिखा था? बॉटनिकल की. आप देखिए मैडम, ये तो बुक है, इस पर की बोल रहे हो. मैंने बोला बच्चों फील्ड पे जाके बताऊंगी बॉटनिकल की क्या है. वी आर गोइंग फॉर स्टडी टूर. राइट? ओके, सो अब आप किट लेके तैयार. आपके किट में एक फाइल, छोटे छोटे जिप लॉक वाले बैग्स, सीजर्स, रेजर्स, राइट, फोल्डिंग करने के लिए मटेरियल, मैंने दी वाली बॉटनिकल की. राइट? ये सब लेके हम स्टडी टूर के लिए निकल गए. Who you are right now? You are a taxonomist.
You are studying APD के knowledge taxonomy, right? So आपने बोला हाँ चलो मैडम हम तो बन गए taxonomy के स्टूडेंट, हम करेंगे क्या? तो मैंने बोला बच्चों सबसे पहले जैसे ही हम फील्ड पे पहुंचेंगे, वहां पे जो हमारी सेंचुरी है ना गौतारा, वहां पे फॉरेस्ट में पहुंच गए हम फील्ड पे पहुंच गए। पहला स्टेप है टेक्सोनॉमिस्ट का कलेक्शन, राइट? वी गो ऑन अ ट्रेल एंड आई टोल्ड यू वी आर कलेक्टिंग स्पेसिमेंस, राइट? फिर आप में से कुछ नटोरियस थे, मैडम मुझे ना ये ट्री का स्पेसिमेन कलेक्ट करना है, कैसे कैरी करेंगे? ट्रक लाए हो साथ में, लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे थोड़ी ना कैरी करना है, आप ही को संभालना, आपका मटेरियल आप संभालेंगे, राइट? मैंने बोला हाँ बेटा कर ले, पापा को फोन बुला ले 2-4 ट्रक, ओके? अलाउड है, गवर्नमेंट ट्री को हाथ लगाने देता है ना? ये सीखेंगे इकोलॉजी में, राइट? नेशनल पार्क सेंचुरी, हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर द रूल्स, ठीक है क्या लॉजिक? तो मैंने आपको बोल दिया बच्चा हम ये स्पेसिमेन नहीं लेके जा सकते, सेंचुरी में ह्यूमन इंटरफेरेंस थोड़ा अलाउड है, आप मटेरियल कलेक्ट करके ला सकते हो, लेकिन वहां की इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, यू आर अ रिस्पांसिबल ह्यूमन बीइंग, राइट? तो मैंने आपको छोटे छोटे टिप्स दे दिए फॉर कलेक्शन। You are supposed to collect flowering twig, which is called specimen. You are supposed to collect flowering twig, which is called specimen, right? तो आपका सीजर लेजर लेके घूम रहे हो, छोटे छोटे प्लांट के, अगर छोटा सा प्लांट है ग्रास, then you can pluck, no problem, which will be having root stem leaf flowers. Huge tree है तो आपको छोटा उसका tiny branch तोड़ना है, okay, जिसको फ्लावरिंग है, राइट? और वहां पे नोट कर लेंगे आप स्पेसिमेन में या मोबाइल पे फोटो डाल के कि ब्ला स्पेसिमेन नंबर, ये ट्री का फोटो, राइट? सो एज अ टेक्सोनॉमिस्ट फर्स्ट स्टेप फॉलोड बाय अस इज कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन. व्हाई वी गो फॉर स्टडी टूर, व्हाई वी अरेंज ऑल दिस टू कलेक्ट द स्पेसिमेन. आप लोगों ने बड़े मजे किए, यू एंटर्ड इन स्प्रिंग, तिथे छोटासा ओढा वाहत होता, त्याच्यात आत गेला दगडावरती, तिथे ग्रीन कलरचा अलगा होता, आपने वो भी स्क्रैप करके पानी में से पकड़ के कैरी बैग में पानी में डाल के बंद करके लेके आए. सो यू कलेक्टेड वंडरफुल सैंपल्स. आपने पानी में जाके अलगा, स्लिपरी म्यूकॉइड स्ट्रक्चर, बड़े मजे किए आपने पानी में. वही जो स्प्रिंग था बाजू में, आपको मॉस, वेलवेट लश ग्रीन कलर का, स्पंजी, राइट? ऐसे बिल्कुल वेलवेट छा गया है ऐसे, आपने वो भी स्क्रैप करके लाए, राइट? आपने कुछ प्लांट के ऊपर प्लांट देखे, वो प्लांट भी आपने लाए. आपने कस्कुटा का ब्रांच भी लाया, येलो कलर का वायर, अमरवेल, याद आ रहा है? ओके, फ्लावरिंग ट्विंस लाए, छोटे छोटे ग्रास के प्रकार लाए. You collected huge sample alga in the water, bryophyte moss in the amphibian category, right? Non-flowering plants, pteridophytes, and flowering plant, they are angiosperm. So variety of material collection. First step of taxonomy is collection. First step of taxonomy, collection. ये लिख लिया, right? Okay, so see. First step of taxonomy is collection. Collection अच्छे से फाइल में दबा के प्रिजर्व करके, बचपन में नहीं आप पीपल बनियान का ट्री का लीफ, राइट, प्रिजर्व करते थे, उसको ग्रीन रखते थे, फिर वो ग्रीन पूरा ऊपर का कोटिंग चला जाता था एंड यू गेट टोटल गोल्डन नेटवर्क, राइट? ओके, सो आपको गोल्डन नेटवर्क नहीं करना है, आपको वो ग्रीन कलर में प्रिजर्व करना है. मैंने आपको प्रिजर्वेशन के स्टेप्स भी बता दिए. जैसे हमने मटेरियल कलेक्ट किया, हम हमारे बस में बैठ गए, राइट? मैंने आपको स्टेप्स बोल दी बच्चों, वो मटेरियल लेना, उसको बड़े से बुक में वेट के अंदर आज रात को दबा के रखना सो दैट इट गेट प्रेस्ड, उसको ज्यादा जगह नहीं लगेगी. रोज पेपर बदलना, उसमें थोड़ा बोरिक पाउडर डाल दो, राइट, ताकि उसको फंगस वगैरह ना लगे. वो ग्रीन कलर का प्रिजर्व हो गया. फिर आप रियल पेपर पे उसको माउंट करो,
टेम्परेचर लूं। सो मैंने सोचा चलो लेबोरेटरी में जाके ही बॉटनिकल की यूज करेंगे, राइट। सो आपने बॉटनिकल की वो बुक ओपन किया। वो बुक पे मैंने लिखा था, वो बुक पे पहली बार वैसे लिखी थी, समझ लो वो बॉटनिकल की। तो वहां पे ऐसे दो ब्रांचेस थे, वन इज फ्लावरिंग, other one non-flowering, flowering plant, non-flowering plant. Sorry. So flowering plant, non-flowering plant. आप लोगों में से कुछ बच्चों ने फ्लावरिंग प्लांट उठाया, तो मैंने बोला चलो जिनके हाथ में फ्लावरिंग प्लांट है ये ब्रांच फॉलो करेंगे, जिनके हाथ में नॉन फ्लावरिंग प्लांट है ये पार्ट फॉलो करेंगे, राइट। चलो, तो आपके हाथ में फ्लावरिंग प्लांट था, आपने पेज टर्न किया तो आपको फिर दो चीजें दिखी, 5 पेटल्स, 3 पेटल्स। मैंने बोला बच्चों गिनो आपके फ्लावर को पेटल कितने हैं, सिंपल। अगर छोटा है तो लेंस ले लो, हैंड लेंस ले लो, राइट, गिन लिए। तो 5 पेटल है तो आप ये बात फॉलो करोगे, 3 पेटल है तो आप ये बात करोगे। तो ये जो मैं पाथ ड्रॉ कर रही हूँ, राइट, व्हाटएवर पाथ आई एम ड्राइंग, वेयर इट इज रिटन, इट इज रिटन इन दैट बुक। That book is guiding you how to classify. Which criteria should be used for classification? Flowering, non-flowering. Which criteria should be used for classification? Is given, that clue is given by botanical key. You are following the path. And remember, they are not just giving you a clue, they are writing down name of this group. If it is written flowering, तो यहाँ पे लिखा है flowering, अगर यहाँ पे लिखा है तो here it will be written angiosperms, right? ये flowering plant के ग्रुप का नाम है angiosperm। अगर इसके पास 5 petals है तो इसको लिखा है dicotyledonine, I'm using the symbol word, very dicotyledonine। अगर 3 petals है तो यहाँ पे लिखा है monocotyledonine, monocot। So what is botanical key? Are you getting me? Botanical key is a book which is giving you simple clues, paths of classification. Botanical key is giving you simple clues, path of classification, right? By following those path of classification, the organisms are allotted to particular group. If you find flowering plant, it is allotted to angiosperm. The flower has 5 petals, it is allotted to dicotyledonine. Flower has 3 petals, then it is allotted to monocotyledonine. This information of how to classify, what is name of the taxa, to which group it is allotted. So all the clues are written in a book, and the book is called botanical key. Same keys are available for zoology. Similar keys are available for viruses, bacteria, fungi, etc. So botanical key, taxonomic key is a book used for studying, describing and classifying the unknown specimen. Okay, so देखो पहला स्टेप आपने क्या फॉलो किया था? कलेक्शन ऑफ मटेरियल। यू वेर taxonomist. APD Candole is taxonomy. Being a taxonomist, you took a first step, collection. Second step, description. You are writing down. It has flower, so allotted to angiosperm. You are describing it is having flower with 5 petals. So you allotted to dicot plant. Okay, so this is how you are going and studying minute detail. मैंने बारीक चीजें आपको दिखाना शुरू कर दिया। देखो उसके पास 5 कार्पेल्स है, उसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है, उसका ट्रांसवर्सेशन लिया। We are dissecting the flower का डिसेक्शन कर लिया हमने। मैंने आपको बहुत शब्द सिखाए, फ्लावर से रिलेटेड बहुत शब्द सिखाए,
इसको डाइकॉट बोलते हैं। ऐसा है, इसको बोलते हैं पेंटाकार्पेलरी। देखो ये सेपल फ्री है, इसको बोलते हैं पॉलीसेपलस। सेपल यूनाइटेड है, उसको बोलते हैं गैमोसेपलस। ऐसे मैंने आपको शब्द सिखाना शुरू किया, फ्लावर दिखाना शुरू किया। डेफिनेटली विल अरेंज सच सेशन, राइट? ओके, चलो। फर्स्ट स्टेप टेकन बाय यू, कलेक्शन। सेकंड स्टेप, डिस्क्रिप्शन। आपने पूरा जो मटेरियल कलेक्ट किया था उसको डिस्क्राइब किया। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन। अब देखो, आइडेंटिफिकेशन वर्ड आप हमेशा मिस कर जाते हो, उसका रियल मीनिंग क्या है आइडेंटिफिकेशन। ओके, अब थोड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूं। ओके, जस्ट गेट द मीनिंग टू अंडरस्टैंड दिस एंड देन विल रिलेट इट विद योर स्टडीज। ओके, सो व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? ओके, जस्ट इमेजिन, ओके, हम जंगल में गए, घूम रहे थे उधर उधर। ओके, राइट? सो घूमते 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 आपने 2-4 प्लांट उठा लिए। वो प्लांट ने आपसे बात करना शुरू कर दिया। रिपोर्टर में जैसे कुछ भी होता है, ओके, लाइक दैट, राइट? सो यू स्टार्टेड टेकिंग दैट फ्लावर ने आपसे बात करना। ओके, मुझे कलेक्ट करके लेके जा रहा है। यू आर टैक्सोनॉमिस्ट, ओके, यू टेक वेरियस टैक्सोनॉमी। या लास्ट ईयर मेरा फ्रेंड भी चला गया था ऐसे। ओके, सो लाइक दैट यू स्टार्टेड टॉकिंग विद द प्लांट, राइट? फिर वो फ्लावर जो था, वो छोटा सा बेबी प्लांट जो था, उसने आपको पूछा, who I am? What do you think? Who I am? Right? Okay, आप परेशान हो गए कि भाई क्या बोलूं मैं तुझे? मैं तो अभी एग्जाम से भी बंद रहा हूँ, I am like learning. What can I tell you? आपने मेरी तरफ देखा कि मैं किसको मैं क्या बोलूं? मैंने बोला रुक जाओ, we'll discuss. Right? So देखो, finding out who is it? A known organism को ढूंढना कि वो कौन है, ये प्रोसेस को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। आप बोलेंगे हाँ मैडम पता है, इसमें क्या बड़ी बात बोल रहे हो? या आई नो। देखो, कंफ्यूज नहीं होने का। ओके, लिसन। इफ आई एम शोइंग यू अ फोटोग्राफ, मैंने आपको एक फोटोग्राफ बताया, मैंने बोला चलो बच्चों आइडेंटिफाई करो। आपने बोला मैडम सचिन तेंदुलकर। मैं बोली नो, यू आर नॉट आइडेंटिफाइंग, यू आर following the procedure of nomenclature. Are you getting me? आपने अगर ये फोटोग्राफ को सचिन तेंदुलकर का बोला तो आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने nomenclature किया। So what is identification? Now you are on the track. देखिए अभी तक ऐसे ही सुन रहे थे। आप देखो, मैंने आपको एक प्लांट का फोटो बताया, या हम जब पिकनिक पे थे, मैंने बोला चलो ढूंढो ये प्लांट कौन है। आपने बोला मैंगो ट्री, राइट? तो मैंगो ट्री, यू आर फॉलोइंग द स्टेप ऑफ नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? मैंगो तो आप जानते हो, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बोला। अननोन ऑर्गेनिज्म को ढूंढना कि वो कौन है, उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। देखिए अब आप कंफ्यूज मेरे सामने खड़े हो गए। वो अननोन प्लांट आपके सामने खड़ा है, वो प्लांट को देख के आपको कोई नाम दिमाग में नहीं आ रहा है। यू कैन नॉट नेम इट, यू कैन नॉट गो फॉर नॉमेनक्लेचर। व्हाई? जिंदगी में पहली बार मिल रहे हो प्लांट से, क्या खा के आइडेंटिफाई करोगे? इसके पहले प्लांट से मिले ही नहीं थे आप, राइट? सो दिस स्टेप in which you identify an unknown plant is identification. ये थोड़ा कुछ समझ रहा है? देखिए आपके सामने एक अननोन पर्सन आके खड़ा हो गया, राइट? उसने आपको पूछा who I am. ऐसे एपिसोड होते हैं ना, फैमिली फंक्शन होता है, आप 8-10 साल के बाद कोई फैमिली फंक्शन में पहुंचे हो, इधर उधर से यूएस अमेरिका इधर उधर से कई लोग आए जिनको आपने कभी देखा ही नहीं होता। वो लोग आपके पूछते हैं अच्छा इसका बेटा है, इसकी बेटी है, ओके, मुझे पहचाना, राइट? बड़ा गुस्सा आता है आपको, आई नो। आप मम्मी पापा की तरफ देखते हो, व्हाई आई एम हियर, राइट, विद दिस अननोन पीपल। मम्मी पापा
बोलते हैं बेटा आइडेंटिफाई आइडेंटिफिकेशन, राइट? अब देखो वो बंदा सामने आके आपको बोल रहा है कि आइडेंटिफाई मी, और उसको आपने आज तक देखा ही नहीं. Isn't it the same scenario? The baby plant is asking you who I am, और आप उससे मिले नहीं हो, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? Listen, the unknown organism is related with a known organism. तो आप क्या बोलोगे unknown organism को? Yes, you are like sunflower. आपने वो बेबी प्लांट को बोला कि हाँ बच्चा प्लांट, you are resembling like a sunflower. आप सनफ्लावर जैसे हो. ये स्टेप को हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन. Relating a known organism with a known organism is called identification. Are you getting me? आपको फैमिली फंक्शन में वो जो अननोन बंदा मिला है उसको आपने बोला यस अंकल, आप देशपांडे अंकल जैसे दिखते हो. दैट इज आइडेंटिफिकेशन. यू आर लाइक देशपांडेज, यू आर लाइक जोशीज, यू आर लाइक मैंगो प्लांट, यू आर लाइक sunflower, you are like donkey, right? You are like horse. What you are doing? You are doing identification. Okay, समझ रहे हो? First step of taxonomy, collection. Second step, description. Third step, identification. Relating a known organism with a known organism is identification. ठीक है, अब देखो आपने क्या बोला? You are like sunflower means you allotted it to a group of sunflower. You are like mango plant, you allotted it to group of mango plant ka group. Isn't it classification? You allotted it to particular class because properties of that known class are resembling with the properties of unknown plant. अननोन प्लांट को आपने एक ग्रुप को अलॉट किया. क्यों? आपने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को कंपेयर किया. आपको सिमिलैरिटीज का एक्सटेंड ज्यादा मिला, तो आपने वो अननोन ऑर्गेनिज्म को, वो ग्रुप को अलॉट किया. राइट? सो अलॉटिंग दैट अननोन ऑर्गेनिज्म टू अ ग्रुप बाय कंसीडरिंग extent of similarity and differences. By considering extent of similarity and differences is called classification. First step, collection. Second step, description by using botanical key. Third step, identification. Unknown organism is analyzed, its description is matched with some other group. Unknown organism is related with known organism. Identification. Once it is properly done, the organism is allotted to that group or subgroup. Classification. Taxonomy step. Collection, description, identification, classification, and lastly, by considering all the characters, go for nomenclature. Right? Okay. So these are the 5 steps of taxonomy suggested by A.P. de Candolle. A.P. de Candolle ने taxonomy कॉइन किया, राइट? और उसके 5 स्टेप हमने अभी इनलिस्ट किए. ओके, चलो व्हाट यू रोट. Taxonomy is equal to taxes plus arrangement. Term taxonomy is coined by A.P. de Candolle. Right? Then you write down botanical key, taxonomic key. It is a book. Botanical key, taxonomic key. It is a book helping in
description of specimen and allotting it to particular group. डिस्क्रिप्शन देख के आपने आइडेंटिफिकेशन किया और वो ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसको वो ग्रुप में जगह दे दी. दैट इज आइडेंटिफिकेशन के बाद क्लासिफिकेशन कर लिया. समझ रहे हो? इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, टैक्सोनॉमी. और जैसे ही आपने वो पर्टिकुलर ग्रुप को उसको बिठा दिया तो आपने और एक स्टेप की, नॉमेनक्लेचर. राइट, चलो आपने लिख लिया. बॉटनिकल की, टैक्सोनॉमी की इज अ बुक helping in description, then considering characters, allotting it to particular group. Okay, chalo write down definition of taxonomy. Definition of taxonomy. It is a branch of biology which studies which includes collection, description, second हो गया. थर्ड, आइडेंटिफिकेशन, classification and nomenclature. It is a branch of biology studying collection, description, identification, classification, nomenclature. यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे, समझ रहे हो? डन, राइट. So come to NCERT, what they are talking about. Okay, how is it related to our discussion? See, hence, based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. अलग-अलग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फीचर्स हमने एनालाइज किए. बॉटनिकल की, टैक्सोनॉमिकल की यूज करके हमने उनको आइडेंटिफाई किया, उनका प्रॉपर ग्रुप आइडेंटिफाई किया और ग्रुप को अलॉट किया, क्लासिफाई किया. देखो शब्द समझ रहे हो? हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा, ऑर्गेनिज्म को देख के, कैरेक्टर्स देख के हमने लिखा. So description is also called characterization. So hence, based on description, characterization, all living organisms are identified and allotted to that particular identified group is classification. Can be classified into different taxa. This process of classification is a taxonomy. ये पूरे प्रोसेस को, ये जो हमने स्टेप यूज किए, कलेक्शन, डिस्क्रिप्शन, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, यहाँ पे उन्होंने नॉमेनक्लेचर नहीं लिखा है, बाद में लिखा है. ये पूरे को हम क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमी. एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर along with structure of cell. अब देखो क्लासिफिकेशन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से करो या उसके सेक्शन दो, अंदर से देखो, या फिर एक सेल ले लो. बैक्टीरिया की टैक्सोनॉमी आपने पढ़नी है. बैक्टीरिया एक सिंगल सेल का है. ओके, तो आप क्या देखेंगे? उसका एक सेल ही देखेंगे. सो फॉर टैक्सोनॉमी, फॉर क्लासिफिकेशन, you can use any criteria depending on the requirement. It can be external characters, it can be internal character, it can be study of a cell. Okay, accordingly there are types of taxonomy on the basis of which criteria is used for classification. They are allotted to different types: cytotaxonomy, morphotaxonomy, right? Then karyotaxonomy.
taxonomy, chemotaxonomy, numerical taxonomy, अल्फा बीटा ऐसे taxonomy के अलग अलग प्रकार है. Right now definition ध्यान में रखो. Okay, so on the basis of criteria used for classification, taxonomy can be of different types. लिख लो. Taxonomy के definition के लिए लिखो. Definition के नीचे लिखो. On the basis of criteria used on the basis of criteria used for classification, there are different types of taxonomy. Okay, example लिख लो. बाद में डिटेल में सीखेंगे. सिलेबस में नहीं है लेकिन रिवीजन में और डिटेल सीखेंगे. Types are chemotaxonomy, cytotaxonomy, numerical taxonomy, etc. External and internal structure, along with structure of cell, developmental process, ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomy studies. Okay, so taxonomy में हम ये अलग-अलग aspect देखेंगे. Taxonomy. Okay, देखो अब definition ये लाइन में आई है. Hence, characterization, identification, classification, nomenclature are the processes that are basis of taxonomy. इसमें बस उन्होंने collection add नहीं किया. Otherwise देखो sequence भी same है. Collection is there. Obviously collection नहीं करोगे तो किसको classify करोगे? First step collection, characterization that is description, identification, classification, nomenclature are the processes that are basis of taxonomy. Okay, next one. Taxonomy is not something. Underline करके वहां पे definition लिख लिया ना, जो भी मैंने बोला था. यहाँ पे underline bracket करके लिखो definition. मैंने जो सीक्वेंस सिखाया वही ध्यान में रखोगे. APD Candole's taxonomy studies 5 steps: collection, description that is characterization, identification, classification, nomenclature. Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about various kinds of organisms. We are wise, we are curious. So obviously when we wonder, we go on studying, analyzing, classifying. So it's like old branch. Scientifically उसको develop किया गया, but we are doing it since years. Particularly with reference to their own use. Underline, main purpose of study of taxonomy to find out the use, development of resources. यूज के लिए अलग-अलग ऑर्गेनिज्म उनको क्या-क्या दे सकता है. That is the main purpose of taxonomy. Development of resources by identifying new and new organisms. Main purpose of taxonomy. Main purpose of study of taxonomy to identify different organisms, biological sources for different use. Medicine है, right? Construction है, okay? Maybe day-to-day life का food है, whatever, different resources. In early days, human beings need to find sources of their basic need of food, clothing, shelter. Hence, the earliest classification based on uses of various organisms. So basically, it was based on uses. Now we are modified. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationship among them. हमने सिर्फ ऑर्गेनिज्म का ग्रुप और उसके यूजेस इसके बारे में पढ़ा नहीं. जब हमने ग्रुप बनाए तो हमने और एक काम किया,
That is, ये group वो group जैसा है. Human beings are like monkeys. Human being monkeys, in between lies chimpanzees. Again, apes, which are no more there, but we find out the fossils. So what are we doing? Tail, monkey with a tail, chimpanzees, apes, mammals. What we are relating? We are relating different groups. Isn't it helping us to study about evolution? Most primitive monkeys with tail, then chimpanzees, then apes, then Homo sapiens. So we study different groups differently. Then we relate them and we make a evolutionary history. This branch is systematics. Taxonomy के साथ साथ, grouping, subgrouping के साथ साथ, अगर evolution के बारे में पढ़ते हो, then it is a branch of biology studying evolution plus taxonomy is systematics. Write down. Systematics is equal to taxonomy plus evolutionary history. Evolutionary history. In the bracket write down phylogeny. 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 Right? So this is systematics. Okay. See, human beings were since long not only interested in knowing about different kinds of organisms and their diversities, but also in interrelationships between them. This branch of study was referred to as systematics. The word systematics is derived from Latin word systema, underline, which means systematic arrangement of organisms. Right? Linnaeus systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. Okay, systematics में फिर वो steps, पहले सिर्फ evolutionary history आया होगी, तो उसमें ये steps ऐड करके एक बड़ा branch बन गया. तो सबसे बड़ा branch है systematics. Systematics में included है taxonomy. Taxonomy में सिर्फ ना arrangement करेंगे. Systematics में arrangement ऐसा करेंगे जिसमें हमको evolutionary history दिखे. Systematics takes into account evolutionary relationship between the organisms. Right? So, सबसे बड़ी branch systematics. It includes taxonomy. Taxonomy include 5 steps: collection, description, that is characterization, identification, classification, nomenclature. Science of naming organism, only nomenclature. सिर्फ organism को नाम दिया, nomenclature. उसके ग्रुप सब ग्रुप बनाए, classification. अननोन ऑर्गेनिज्म को नोन से रिलेट किया, आइडेंटिफिकेशन. बॉटनिकल की टैक्सोनॉमिकल यूज करके उसको डिस्क्राइब किया, कैरेक्टराइजेशन, डिस्क्रिप्शन. फील्ड पे जाके कलेक्ट किया, कलेक्शन. गेटिंग small steps, right? Collection, description, identification, classification, nomenclature is included in APD Candolay's taxonomy. Taxonomy plus phylogenetic relationship, evolutionary relationship. Linnaeus का systematics. Clear, right? So it's simple. बस